lateral edge of the latissimus water seal drainage system, and opposite happens in the ventilator, removing in the water seal chamber when the patient breathes. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss a very important topic for the NORCET exam, which is chest tube drainage system, right? Chest tube drainage system एक ऐसा टॉपिक है from which we expect 1 or 2 question every year. एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल repeatedly पूछा जाता है, right? So इसमें हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं एंड कौन से की कांसेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट नो व्हाइल यू आर केयरिंग फॉर द पेशेंट्स हु हैव इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, ICD बोलते हैं जिसको, ठीक है? सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, वी नीड टू नो लिटिल अबाउट द एनाटॉमी so that we could know what are the indications for which we are using this chest tube drainage, right? So if we talk about the anatomy, one is we have trachea, which bifurcates at the point of carina. This is trachea, which is bifurcating at the point of carina. Carina कौन सा point होता है जहां से bifurcation होता है trachea का into two primary bronchi, ठीक है, right and left. जो right होती है वो राइट लंग में एंटर कर जाती है एंड लेफ्ट ब्रोंकाई विल एंटर द लेफ्ट लंग, राइट? बट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू नो व्हाट आर द लेयर्स दैट सराउंड द लंग्स, राइट? जो हमारी लंग्स होती हैं उसके आसपास एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज अ प्लूरा, विच इज अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है? लंग्स हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज अ प्लूरा, ठीक है? अगर हमें प्लूरा ड्रॉ करना हो, इफ दिस इज आवर लंग, ठीक है, उसके आसपास एक डबल मेम्ब्रेन होता है which is called as a pleura, ठीक है? अब pleura is visceral pleura भी होता है, एक parietal pleura होता है, इन टू layers के नेम है. The inner one is visceral pleura and the outer one is the parietal pleura, ठीक है? एंड जो ये बीच में empty space बचा इसको हमने बोल दिया pleural cavity, ठीक है? अब हमारे पास दो लेयर्स हैं, विसरल लेयर भी है, एक पैराइटल लेयर भी है. दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो नॉर्मली आइडियली इट हैज सम 15 to 20 ml ऑफ प्लूरल फ्लूइड व्हिच इज नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, ठीक है? अब इस कैविटी में क्या होता है, वी हैव 15 ml ऑफ प्लूरल फ्लूइड which will be present, which will prevent the friction between these two layers. ये तो हो गया नॉर्मल. But there is an abnormal condition which is associated with this cavity. For example, if the collection of the pleural fluid is exceeding 15 ml, 20 ml, more than 15 ml if it is there, then we call it as a condition called as a pleural effusion. ठीक है? So different scenarios होते हैं जिसमें इसकी abnormalities को हम पढ़ते हैं, which I will be discussing now. We have primarily 4 to 5 abnormalities related to this. Number 1, we have pneumothorax. If there is abnormal collection of air inside pleura, अगर pleural cavity में abnormal collection of air हो जाता है, then we call it as pneumothorax, ठीक है? What is hemothorax? If there is a abnormal connection of the serosanguinous drainage, ठीक है? कौन सी drainage? If there is a collection of serosanguinous drainage, blood tinged होती है, ठीक है? Third condition we have is empyema. Empyema क्या होता है? I'm not talking about emphysema, which is a condition associated with the chronic obstructive pulmonary disorder. We are here discussing about the empyema. Empyema is the collection of pus in the pleural cavity. अगर pleural cavity में pus collect हो जाती है, then we call it as empyema, right? Chylothorax. Chylothorax is a terminology that we are using for the abnormal collection of the lymphatic fluid inside the pleural cavity. अगर तो lymphatic fluid collect हो जाता है, if there is an abnormal collection of the lymphatic fluid inside the pleural cavity, then we call it as a chylothorax. I hope it is clear. We have discussed up till now what is pneumothorax. अगर air fill हो जाता है in the pleural cavity, if what is hemothorax? If there is abnormal accumulation of the serosanguinous secretions or the drains in the pleural cavity.
If the abnormal collection of the pus is there, then it is called as empyema. If there is abnormal collection of the lymphatic fluid, it is called as chylothorax. But last is pleural effusion. What is pleural effusion? If there is more than 15 ml of pleural fluid being collected inside the pleural cavity, then we call it as a pleural effusion. Effusion का मतलब क्या होता है? जब कहीं भी fluid accumulation बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? Now, it is to be noted that prime modality for treatment of pleural effusion is not chest tube drainage, it is thoracocentesis. ठीक है? Primarily, जब हम pleural effusion की बात करते हैं, for the treatment of pleural effusion, we are not going to insert a chest tube drainage system. Primarily, it is being sorted out with the help of a procedure called as thoracocentesis, where it is USD guided procedure wherein a 18 gauge needle is inserted on 7 to 8 intercostal space, and the excessive fluid which is being collected in the pleural cavity is expelled out, right? अगर यहाँ पे एक इंडिविजुअल को recurrently pleural effusion develop हो रहा है, then and then only we are going to insert the chest tube drainage. Otherwise, for the pleural effusion, there is no need for the insertion of a chest tube drainage. This is the prime thing that you must know. ये चारों indications है. This is also indication 2, 3 and 4. But if the pleural effusion is recurrent, then it is an indication of ICD insertion. Otherwise, it is not. Because for the normal pleural effusion, thoracocentesis is the treatment modality. Right? I hope it is clear. उसके बाद अब हम एक chest tube drainage, एक chest tube insert हो रही है किसी की body में. There must be some size. So for the sizes, here we are talking about the adult sizes which range between 28 to 32 French. ठीक है? 28 to 32 French. ठीक है? Up we have a differentiation. When we are talking about French, when we are talking about mm, we are talking about two different diameters. I hope you must be knowing. So please do write in the comment box, what does French signifies? Is it the internal diameter of a tube or an external diameter of a tube? Do write in the comment box, right? उसके बाद we talk about the site of insertion. If we are talking about the site of insertion of the chest tube drain in the adults, it is 4th to 5th intercostal space anterior to mid axillary line. ठीक है? 4th to 5th intercostal space anterior to the mid axillary line. ठीक है? उसके बाद child में it is 2nd intercostal space mid clavicular line. दोनों में साइट्स वेरी करती हैं, एडल्ट्स में भी और चिल्ड्रन में भी. आई होप इट इज क्लियर. हमने साइज स्टडी कर लिया 28 to 32 डिग्री फ्रेंच. प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं दैट यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द साइज, रिलेटेड टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द ट्यूब. सो यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग. हमें साइट पता होनी चाहिए, हमें कैथेटर का साइज भी पता होना चाहिए और साइट ऑफ द प्रोसीजर भी वी मस्ट बी नोइंग, राइट? आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट. वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी. जब भी किसी पेशेंट को चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया जाता है, एक ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी को माइंड में रखा जाता है. ठीक है? अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इट इज द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी व्हिच हैज 4 पार्ट्स, राइट? बेस ऑफ द एक्सिला, lateral edge of the latissimus dorsi, lateral edge of the pectoralis major muscle and the 5th intercostal space. जब हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट the 3 structures that are being associated while the chest tube is being inserted inside the chest of the patient. ठीक है? एंड अब यहाँ पे नॉर्सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी एक फिजिशियन इज इंसर्टिंग अ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब जब इंसर्ट हो रही है तो इंसर्शन हाउ इट इज बीइंग डन, राइट? इट इज डन फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब. ठीक है? मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं लाइक लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब, बट यू मस्ट बी नोइंग जो इंसर्शन होती है इट इज बीइंग डन फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट अंडर वाटर सील ड्रेनेज, राइट? जो हॉस्पिटल्स में आजकल यूज होता है. ठीक है? इसको हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे. We will be discussing what is necessary for the examination. For example, अगर किसी पेशेंट
कोई पेशेंट इज कनेक्टेड टू द अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट विल बी द लोकेशन? जो वो ड्रेनेज सिस्टम है वो चेस्ट के अबव प्लेस होगा कि चेस्ट के बिलो प्लेस होगा? डेफिनेटली इट विल बी प्लेस्ड बिलो द चेस्ट लेवल. It will be placed below the chest level, right? उसके बाद हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं for the seal drainage system. One is the collection chamber, other is the water seal, third is the suction chamber. इन तीनों के बारे में कुछ selected points हैं that you must know. First thing is that if you are talking about the collection chamber वो chamber है जो patient के chest के साथ connected है, जहाँ पे जो भी बीट ब्लड, बीट एयर, बीट पस जो कलेक्ट होगा, कलेक्शन चैम्बर की बात हो रही है. ठीक है, कलेक्शन चैम्बर क्या? इट इज अ चैम्बर वेयर इन द ब्लड whatever the abnormal thing that has been collected in the pleural cavity will be collected. ठीक है, ये वो कलेक्शन चैम्बर है. ठीक है, सो जब भी हम किसी पेशेंट को अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं, द फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइमिंग ऑफ द ट्यूब. What is priming of the tube? I will be letting you know, right, in a while. Till then, you must know what is collection chamber, what is water seal chamber, and what is a suction port. Now, what happens in the water seal? हम water seal में क्या करते हैं? We fill the water seal with 20 ml of sterile water, और उसमें जो probe होती है उसको 2 centimeter dip कर देते हैं. ठीक है, इसको बोला जाता है priming of the water seal drainage system, which is the nursing responsibility, right? This water seal drainage system, water seal chamber is filled with 20 ml of sterile water with the seal probe being dipped 2 centimeter inside the water. ठीक है, 2 centimeter इंसर्टेड होती है, 20 ml sterile water उसमें प्रेजेंट होता है. इसी प्रोसीजर को प्राइमिंग बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट इज लेवल फ्लक्चुएशन. अब देखो, हमने क्वेश्चंस देखे होंगे इस आईसीडी के टॉपिक से, दैट बबलिंग हो रही है. ठीक है, व्हेन द पेशेंट इज इनहेलिंग, व्हेन द पेशेंट इज एक्सहेलिंग, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल्स, राइट? द लेवल फ्लक्चुएशन इन द नॉन वेंटिलेटेड पेशेंट. जब भी कोई लेवल फ्लक्चुएशन हम एक नॉन वेंटिलेटेड पेशेंट में देखेंगे, व्हेन द पेशेंट विल इनहेल द वाटर लेवल विल गो अप, एंड व्हेन द पेशेंट विल एक्सहेल द वाटर लेवल विल गो डाउन, अप डाउन, एंड ऑपोजिट हैपेंस इन द वेंटिलेटर पेशेंट. That means when the patient who is on ventilator, जब वो inhale करेगा तो water level down जाएगा, जब वो exhale करेगा तो water level up जाएगा. ये prime difference है अगर एक ventilator patient है और एक non ventilator patient है. ठीक है, what to do if there is no fluctuation in the water seal chamber? अगर आपने नोट किया कि कोई water seal chamber में कोई fluctuation ही नहीं हो रही है, then it has two major considerations. Either ट्यूब इज किंक्ड, या तो ट्यूब किंक हो गई है या वो ऑब्स्ट्रक्टेड है. सेकेंडली क्या हो सकता है? सेकेंड थिंग इज दैट जो चेस्ट था वो क्लियर हो चुका है. द चेस्ट इज क्लियर नाउ. चेस्ट यहाँ तो क्लियर हो गया, मतलब जो हमारा पर्पस था चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डालने का, इट हैज बीन सॉल्व्ड. या फिर देयर इज सम किंकिंग, देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल्स. ठीक है, तो ये दो ही कंसिडरेशन हो सकते हैं अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट हैज बीन आस्क्ड इन द नॉर्सेट 2 or 3 times, right? After that, the next thing is that you must be knowing that intermittent bubbling in the air leak monitor is normal. अगर एयर लीक मॉनिटर में इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है. इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इंटरमिटेंट बबलिंग. एंड the continuous bubbling in the wet suction chamber is normal. तो आपने ये भी क्वेश्चंस देखे होंगे कि कई बार हमारा इंटरमिटेंट बबलिंग वाला ऑप्शन सही होता है, कई बार हमारा continuous bubbling वाला आंसर सही होता है. If they are talking about the continuous bubbling in the wet suction chamber, it is normal, but the continuous bubbling in the air leak monitor is absolutely abnormal. So you must know these two lines to figure out multiple questions related to this topic. अगर आपको ये दोनों लाइन समझ आ जाती हैं, then you will be able to figure out most of the questions that are related to the ICDs, right? उसके बाद प्रेशर. अब जहां पे भी हमने वेट सक्शन चैम्बर की बात करी, wherever we are talking about suction, we have certain pressure.
ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है फॉर द नॉसेट. एंड द प्रेशर इज -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. एंड द प्रेशर इज -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इन द प्रीलिम्स, राइट, कि कितना प्रेशर होता है इन द सक्शन चैम्बर. इट इज -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. आफ्टर दैट स्टेप्स ऑफ रिमूवल. अब आईसीडी रिमूव करना है, कुछ स्टेप्स होंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज chest x-ray. Chest x-ray must be done to figure out whether the purpose of the insertion of the chest tube drainage has been solved or not. क्या वो purpose solve हुआ है? If yes, then we move on to the next. उसके बाद if the drainage is less than 200 ml in the last 24 hours, it can be indication that yes, the chest tube can be removed now. ये दोनों प्राइम इंडिकेशंस होती हैं. While removing chest tube, we instruct the client to do Valsalva maneuver. ठीक है, पहले चेस्ट एक्सरे करना है to figure out whether the purpose of the insertion of the chest tube has been solved. If yes, and if the drainage is less than 200 ml for the last 24 hours, then it can be indication that yes, the chest tube can be removed now. ठीक है, उसके बाद जब भी आप chest tube को remove कर रहे हो, always instruct the patient to perform Valsalva maneuver if the patient is conscious. डेफिनेटली अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तभी आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे टू डू द वल्सल्वा मैन्यूवर. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज Q&A सेशंस. अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आना इज लाइक श्योर. ठीक है, एंड ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. हम मल्टीपल सोर्सेस से इसको पढ़ लेते हैं. So always I recommend that you should study the topics from one source, ठीक है, to prevent any kind of confusion and discrepancies, right? So the first question is, if there is tiddling in the water seal chamber when the patient breathe, जब patient breathe कर रहा है, there is some tiddling which is like fluctuation in the water seal chamber. How you interpret it? You will inform the healthcare professional. Number one, check for the air leaks. Third, it is a normal finding. Fourth, check tube is kink or obstructed. It is to be noted that जब patient breathe कर रहा है, tiddling is a normal finding. ठीक है, so we will not inform the healthcare professional. There is no leak, there is no obstruction, but yes, it is a normal finding. बहुत ही direct question था that it is a normal finding, right? The next question, if the patient has chest tube catheter disconnected and fallen on the floor. ठीक है, chest tube accidentally क्या हुई, वो disconnect हो गई and it fell on the floor. What will be your priority nursing intervention? You will inform the team leader. Number one, insert it 1 inch inside the bottle of a sterile water and obtain new system. Third is clamp the tube and inform the healthcare professional. Fourth is remove the tube. See, if you're talking about the prime nursing intervention, we are not supposed to remove the tube at all. अगर tube निकल के fall down कर गई, we are not supposed to remove it absolutely. No, this is very incorrect. Informing team leader is important, but not a priority nursing intervention. ठीक है, prioritize करना है अगर हमें, तो we have to prioritize inserting it into a bottle of sterile water and obtaining a new system so that the patient safety is ensured. ठीक है, आप क्या करोगे, उसको 1 इंच एक किसमें इंसर्ट कर दोगे, स्टेराइल वाटर की बॉटल में. You will insert it and you will obtain a new system. That will be the priority nursing intervention. Not informing the team leader, not clamping it, not removing it. See, informing is important, but we have to prioritize something. So priority is inserting it 1 inch into the bottle of sterile water and then obtaining a new system, then informing it to the healthcare professional, right?
Next is a very important question. What is priming of chest tube? As I've already discussed, जब भी कोई patient अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होगा, there will be some priming of the chest tube. उसका मतलब क्या है? Fill the drainage bag with sterile water before connecting it to the tube. ठीक है? Yes, it is true. We will fill it with sterile water. Next is use 20 ml of sterile water. Yes. हम कितना sterile water use करते हैं? We will be using 20 ml of sterile water. This is also correct. Submerge distal end in 2 centimeter of water. जो distal end होता है उसको हम कितना इंसर्ट कर देते हैं? 2 centimeter of water. This is also correct. So जब हम ड्रेनेज पैक को 20 ml स्टेराइल वाटर से फिल करके डिस्टल एंड को 2 सेंटीमीटर सबमर्ज कर देते हैं वाटर में. अब 2 सेंटीमीटर क्यों सबमर्ज किया? ताकि हमें फ्लक्चुएशन लेवल्स को पता चल सके. जब टिडलिंग हो, जब फ्लक्चुएशन हो, जब पेशेंट इनहेल करे, एक्सहेल करे, वी गेट टू नो वेदर द ICD is working properly or not, right? And the last option is all of the above. So the answer comes out to be option D, all of the above. प्राइमिंग में तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं. स्टेराइल वाटर से फिल करना है, we have to use 20 ml of sterile water and we have to dip the distal end 2 centimeter in 2 centimeter of water, right? Last is, if there is no fluctuation of water in the water seal drainage, water seal chamber, what will be the priority nursing intervention? So this is a question for you, all of you. So please do write the answer in the comment box and stay tuned for our next upcoming videos. We have a good content for you for the upcoming NORCET 8. Do watch our videos, do subscribe to our channel. Thanks for watching.